Good evening. Welcome to matrixdigilearn, and today the class of computer awareness. Today we will discuss about the Microsoft Excel, the basic parts and the advanced parts of the Microsoft Excel. First thing, what is Microsoft Excel? A Microsoft Excel कहले हमें कौन बुझू? Microsoft Excel is an electronic spreadsheet application software from Microsoft company. तो Microsoft company द्वारा डिजाइन करा जायतिबा Microsoft Excel टा होछ गोटे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ताले व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट कहले हमें कौन बुझू? The spreadsheet is a table of values arranged in rows and columns. Each value can have a predefined relationship with other value, and if we change one value in a data range, then its related values will also change. ताले हमें स्प्रेडशीट कहले कोन बुझू? स्प्रेडशीट इज ए टेबल ऑफ वैल्यूज अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स. स्प्रेडशीट होची गोटे देखिबा पई टेबल भली जिंस. टेबल ले जेमति हमको रो आ कॉलम्स मिले, तो एग्जैक्टली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मध्ये हमें स्टार्ट करले से टेबल फॉर्मेट रे ही जिंस पाइबा, जोथरे के अनेक गुडा हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल ग्रिड्स गुडा को पड़ीथियो. ताले स्प्रेडशीट इज ए टेबल ऑफ वैल्यूज अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स. स्प्रेडशीट होची टेबल भली गोटे जिंस जोथरे की वैल्यू गुडा को हमें रो आ कॉलम रे सजेइबा. Each value can have a predefined relationship with other value. एबुली भाबे वैल्यू गुडा को हमर स्प्रेडशीट रे थाए, जहा कि प्रत्येक वैल्यू रो प्रत्येक वैल्यू सहित गोटे प्रीडिफाइंड रिलेशनशिप थाए. If we change one value in a data range, धरि नियो हमें किछि संख्या को नै गोटे सम बाहर करिछि. से कहबा कथा से डाटा रेंज भितरे जदि हमें गोटे वैल्यू को चेंज करूचे, ताल तार रिलेटेड वैल्यू माने सम ऊपर मध्ये इफेक्ट पड़िबो. पांचटा वैल्यू रु जदि गोटे वैल्यू को हमें चेंज करूचे, तार इफेक्ट मध्ये जो पांचटा संख्या को नै सम बाहर दिबो, से सम रो वैल्यू मध्ये अल्टीमेटली चेंज हो जिवो. सो Excel is like that. So today we will discuss about the some MCQ related to the Excel that may be advanced, that may be basic. Let's go to the discussion part. Microsoft Excel. First question for you: what is the intersection point of column and a row on a worksheet called? गोटे इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्ट माने जोटा कहूछ हमें छेद करे बा परस्पर को इंटरसेक्ट करे, जोटी रो आउ कॉलम गोटे वर्कशीट रे, ताले सेटा को हमें कोन बोली कहू. एठी टिके मु कहि देबा को चाहूची. वर्कशीट कहिला हमें कोन बुझू? वर्कशीट माने जोटा जेंती हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे काम करू पेज रे, जेंती पावर पॉइंट रे काम करू हमें स्लाइड रे, एग्जैक्टली सेंती माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंटरफेस रे जोथिरे काम करा जाय सेटा को कहंती हमर वर्कशीट. आउ तार जेंती वर्ड रो फाइल को डॉक्यूमेंट्स बोली कहा जाय, पावर पॉइंट रो फाइल को जेंती प्रेजेंटेशन बोली कहा जाय, एग्जैक्टली सेंती एक्सेल रो फाइल को हमें गोटे वर्कबुक बोली कहिताउ. ताले मते एठी अछि जे व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द कॉलम एंड ए रो ऑन ए वर्कशीट. से जो वर्कशीट हमें देखुचे दैट इज द कलेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड्स. ऑब्वियसली वर्कशीट रे जो हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल ग्रिड्स गुडा का पड़ी थाए, से जो रो आ कॉलम क्रिएट करे. तो गोटे रो आ कॉलम को परस्पर जोटी इंटरसेक्ट करंती, तो अनेक गुडा जिंस तयारी हुए. व्हाट आर दैट थिंग्स? द राइट आंसर इज द डी, दैट इज द सेल. सेल इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम. नेक्स्ट, what type of chart is useful for comparing values over categories? Different category गुडा का थिबो हमरो, ताले से जो कैटेगरी भितरे आमे जदि किछि कंपैरिजन करिबा को चाहूथिबा, तो ए टिके जस्ट चार्ट विषय भी कहि देबा को चाहूछु. व्हाट इज चार्ट? चार्ट मींस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डाटा. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मींस एक्सेल रे तो आमे अनेक गुडा डाटा फीड करू. सपोज हियर इज द प्रोडक्ट नेम्स, हियर इज द their quantity and the according to their months, से डाटा गुडा को फीड करा जायतिबो. that cannot be easily understood by a layman. गोटे साधारण लेमैन मींस गोटे साधारण लोक से डाटा गुडा को बुझी परिबो ना. गोटे साधारण लोक से डाटा गुडा को इजीली बुझी परिबो नाही. तो से जो इजीली अंडरस्टूड पाई बा इजीली जणे बुझीबा पाई हमको कोन करिबा को पड़िबो ना, चार्ट रो डिजाइनिंग करिबा को पड़िबो. तो चार्ट माने the graphical representation of a data that can easily layman understood, गोटे साधारण लोक बुझी परिबो.
तो आमे विभिन्न प्रकार चार्ट यूज करू जेमति कि तमरो लाइन चार्ट, बार चार्ट, बबल चार्ट, पाई चार्ट। तो मु कहिबा कथा व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज ओवर कैटेगरीज। अनेक गुडे कैटेगरी दिया जाइथिबो, से कैटेगरी पाई को चार्टटा अधिक सुइटेबल होबो। विभिन्न कैटेगरी रो प्रोडक्ट्स गुडा को पाई को चार्ट अधिक सुइटेबल। द चार्ट इज मोस्ट सुइटेबल फॉर द कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट रे हमें आराम से देखे दे परिबा जे अनेक गुडा कैटेगरी कोन कोन अछि। नेक्स्ट, which function in Excel tells how many numeric entries are there। गोटे डाटा रेंज आमे नै छे एंड से डाटा रेंज भितरे आमे देखिबा को चाहू छे केतेटा पर्टिकुलरली न्यूमेरिक वैल्यूज, नॉट कैरेक्टर वैल्यूज, नॉट सिंबॉलिक वैल्यूज, नॉट एनीथिंग एल्स, ओनली द न्यूमेरिक वैल्यूज माने नंबर वैल्यू गुडा को केते अछि जानिबा पई आमे एक्सेल रो को फंक्शन ता सुइटेबल हुए। The right answer is count। Count the number of cells that contain only numbers। केवल numbers थिबा जिंस को काउंट रे हमें जानि परिबा गणना कर देबो से केतेला सेल रे नंबर अछि। नेक्स्ट, a feature that displays only the data in column or columns according to specified criteria। एमानो को भितरु को फीचर एक्सेल रे अछि। हमें तो एक्सेल रे बहुत गुडा जिंस जानि छे, पाइवट टेबल, सिनेरियो, consolidate, data validation, conditional formattings, there are many things। मु कहिबा कथा a feature that displays only the data in column or columns according to specified criteria। निर्दिष्ट गोटे क्राइटेरिया रे, निर्दिष्ट गोटे कंडीशन बेसिस रे गोटे कॉलम बा कॉलम गुडा करू को फीचर्स निर्दिष्ट डाटा को हमको देई पारे। What is the right answer? Option A is your formula, option B is your sorting or sort, option C is your filtering or filter, and last is your pivot table or pivot। What is the right answer? The right answer is option C, that is the filtering। If you put the filter to the columns, then it can be show according to your data, according to specified your condition। Like if you want to, there are many names in a column, if you want to show particularly names starting from the S letter, then in the text filter you can put the S letter that begins with the S letter, particularly तुमको S letter रे थिबा ना गुडा को शो करिबो। सपोज मते देखिबार अछि मते 10,000 to 20,000 केते जण एम्प्लॉय सैलरी पाउछन, then we can put a condition by the numbering filter to take is greater than and equal to 10,000 and is less than equal to 20,000, then it particularly returns the salaries between 10,000 to 20,000, whoever employee get that particular salary। Okay, next we go to the next part। Our next question is statistical calculations and preparation of tables and graphs can be done using किछि हमें स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन गुडा करिबा, प्रिपरेशन करिबा ताकु नै कि टेबल ताकु ग्राफिकली भी इजीली रिप्रेजेंटेशन करि परिबा। तो को एप्लीकेशन एमानो को भीतर अधिक सुइटेबल? ऑब्वियसली एक्सेल पढुचे बोली एक्सेल कहि दोचे, बट बुझिबा दरकार व्हाई इट इज एक्सेल। तो हमें वर्ड रे डाटा को प्रेजेंट करूचे, बट ग्राफिकली हमको प्रेजेंट कला को निश्चित भाबे प्रॉब्लम हो। पावर पॉइंट तो बेसिकली हमें जानि छे दैट इज पर्टिकुलरली फॉर द प्रेजेंटेशन, means here we can give the sound effects, animation effects, etc. But particularly that application is Microsoft Excel, where we can analyze the data properly and prepare the graphs, tables or charts accordingly। Next, what type of chart will you use to compare performance of two employees in the year 2016? 2016 रे मनकर किछ डाटा दिया जाइछि एंड दी जण एम्प्लॉयी कर डाटा को हमें कंपैरिजन करबा को चाहूचे। धरि नियो से वर्षर जहा जहा डाटा गुडा को अछि जनवरी टू डिसेंबर सेमान को परफॉर्मेंस विषय दिया जाइछि, से दुई जण को नै कि हमें पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट करबा को चाहूचे जे किए केते परफॉर्मेंस को भली दैछि। तो को चार्ट ए जगह रे अधिक सुइटेबल होबो?
Line chart is more suitable because we can show the increase or decrease easily here. Next, which one is not a function in MS Excel? एमानक भितरु Microsoft Excel रो कोटा गोटे फंक्शन नुह. Average गोटे फंक्शन. Average तो निश्चित भावे गोटे फंक्शन, but AVG there is no function in Excel. That function is named as average. AVERAG. That is average. So AVG is no function is there. Sum is already a function. Max is already a function. Mean is already a function. एटी mo function विषय रे कहि देबाको चाहूची. What is function? The predefined calculations in Microsoft Excel already given name for easy use known as function. Microsoft Excel रे already किछि calculation रो आगुरु नाम दिया हिके अछि that can a user can use easily. जहा को गोटे यूजर अति सहज रे व्यवहार करि परिबो. So that is known as your function. Functions are special, reserved, pre-written formulas already given name for easy use. ए जो फंक्शन आमे कहूचे ऑलरेडी कैलकुलेशन गुडा करो ना दिया हिके अछि जहा को कि गोटे यूजर अति सहज रे व्यवहार करि परिबो. तो फंक्शन रो डिफरेंट कैटेगरी गुडा क अछि जेंदि कि आमे किछि फाइनेंशियल फंक्शन अछि, किछि स्टैटिस्टिकल फंक्शन अछि, किछि लॉजिकल फंक्शन अछि, किछि लुकअप फंक्शन अछि, किछि हमरो जेंति कि होचे मैथ एंड ट्रिंग फंक्शंस अछि, किछि टेक्स्ट फंक्शन अछि. एई भली हमरो एक्सेल रे अनेक गुडा फंक्शन कैटेगरीज अछि एंड ता अंडर रे किछि किछि फंक्शन गुडा का आसुछि. जहा भी हो मोर क्वेश्चन रो राइट आंसर होछि एठी एबीजी बोली किछि गोटे फंक्शन नाही. नेक्स्ट, functions in Microsoft Excel must begin with also formulas also that begins with. Microsoft Excel रे आमे कोनोसी फॉर्मूला बा फंक्शन लिखिला बळे सेटा केमिति आरंभ होबा दरकार बा सेटा केमिति स्टार्टिंग होबा दरकार. ऑप्शन गुडा कहूची on first bracket starting and ending, an equal to sign, a plus sign or a greater than sign. कोटा भितर राइट आंसर होबो, कोटा भितर ठीक आंसर होबो equal sign. An equal to sign. Right answer is the equal to sign because analysis from this point, if there is no equal to sign starting with a formula or a function, that considered as a regular data, means that is a text or numbers, that is not considered as a function or a formula. जदि समान चिन्ह रु आमे कोनोसी एंट्री आरंभ न करिथिबा ताहले सेटा से उडे एक्सेल रो रेगुलर टेक्स्ट बा रेगुलर नंबर कोनोसी सेल रे एंट्री छि बोली धरि नबो, कोनोसी फॉर्मूला बा फंक्शन बोली ताको कंसीडर करिवो नाही. नेक्स्ट, which function in Excel checks whether a condition is true or not? This is a logical function also. एमानक भितरु कोउटा से लॉजिकल फंक्शन जहा कि किछि चेकिंग करे गोटे कंडीशन ट्रू बा फॉल्स एई टाइप रो जिंसो कंसीडर करे. ट्रू बा फॉल्स, I give you the side through see the screen. The options are sum, count, if, average. एमानक भितरु कोउटा ठीक है? If is the logical function that checks whether that is condition is true or false. ठीक है, हमें एनालिसिस कर दबा if ऊपर. If means checks the data range according to the condition and returns the value if that is true and skip the another value if it considers to false. हमें डाटा रेंज रे अनेक गुडा वैल्यू एंट्री करिचे, कंडीशन मेंशन करिबा, सेही वैल्यू को से रिटर्न करिवो जोटा कंडीशन अनुसार ट्रू बोली अछि एंड से अनदर वैल्यू को स्किप करि जिवो जोटा कंडीशन अनुसार फॉल्स बोली प्रमाणित हबो. धरि नियो हमें गोटे डाटा रेंज रे पिला मानक मार्क्स गुडा का एंट्री करछवा, स्टूडेंट मानक मार्क्स गुडा का एंट्री करछे एंड हमें जानिबा को चाहूचे जे पर्टिकुलरली whoever the students gets equals to or greater than marks 30 marks, that will be the pass mark, and in the subject whoever secured the below 30 marks, that is the fail student. ताल सेही जगह रे हमें if फंक्शन रे यूज करी कि जानि परिबा जे किए पास हिची बा किए फेल हिची. नेक्स्ट क्वेश्चन, in Excel cells are labeled as, हमें जस्ट ठीक पूर्व भी डिस्कशन कले, cell is the intersection point of row and column.
देन मोर क्वेश्चन रहउचे एठी आमे जो सेल गुडा को कहउचे पर्टिकुलरली से सेल गुडा कर केमिते नेमिंग हिताय बा केमिते लाबेल हिताय कोडा भीतर राइट आंसर होबो ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी Option C. Option C is the right answer because rows are named as 1, 2, 3, 4 and columns are named as A, B, C, D and cell is the intersection point of row and column. So the right answer is A1, A2, A3, B19, C20. Cells are named as like that. Next question. The process of arranging the items of a column in some sequence or order is known as आमे कॉलम्स रे डाटा गुडा को किछि गोटे ऑर्डर रे सजेइबा किछि गोटे सीक्वेंस रे सजेइबा तो एक्सेल रो को फीचर्स द्वारा सेटा करि हबो ऑप्शन ए इज अरेंजिंग और अरेंज ऑप्शन बी इज ऑटो फिल ऑप्शन सी इज सॉर्टिंग ऑप्शन डी इज फिल्टरिंग व्हाट इज द राइट आंसर I will Sorting. give you the screen. Sorting or sort is that feature which can sort the data according to alphabetically or numerically in ascending or a descending order. Next question. The dash feature of Microsoft Excel quickly completes a series of data. Microsoft Excel रे को feature अछि बा को characteristics अछि जहा कि हमको गोटे शीघ्र गोटे डाटा रेंज को कंप्लीट करबा को हेल्प करे. Options are auto complete, auto fill, fill handle and sorting. Autofill. Autofill. Can you tell me about the autofill? Autofill विषय मते किछ कहि परिबो ना एठी केवल हाइलाइटिंग हेइचे बोली इटालिक्स रे आंसर टा आइडेंटिफाई करिया को सुविधा हला. Do you want some clarification about this topic? किछ क्लैरिफिकेशन चाहूछो ऑटो कंप्लीट ऊपर कोन पई एटा ऑटो फिल होबो बोली किछि क्लैरिफिकेशन चाहूछ ठीक अछि मु कहि दोउची एक्सेल रो ऑटोमेटिक डाटा एंट्री हुए तुम निश्चित भाबे एटा जानिथिबो कि न जानिथिबो तथे मु क्लैरिफाई कर दोउची एक्सेल रे ऑटोमेटिकली डाटा एंट्री हुए ऑटोमेटिकली डाटा एंट्री होबा पई देयर आर थ्री फीचर्स आर अवेलेबल वन इज योर ऑटो फिल another is your fill series and next is your auto complete one by one discussed it first is your auto fill means आपे आपे फिल अप हुए जेमति कि there are many situations may come where we need a series of row or column headings by the serial numbers days of a days of a week months of a year and dates of a month बेले बेले गोटे सिचुएशन आसे एमती आइदर हमको रो बा कॉलम मानकर हेडिंग गुडा को करिबा दरकार पड़े जेमति कि वर्षकर 12 मास ना रे बा जोटा कहूचे हमें सप्ताह रो 7 दिन ना रे बा केबे केबे मासर डेट गुडा को अनुसार बा 1 2 3 फॉर्मेट हो बा आज लाइक द सीरियल नंबर्स हमको इन रो बा कॉलम रे हेडिंग करिबा को पड़े तो से जो हेडिंग गुडा को हमको रिपीटेडली टाइपिंग करिबा दरकार नै दैट इज ए फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रो ଗୋଟେ फीचर्स अछि सेही गुटा को कहंती तमर जोटा कहला ऑटो फिल रे हमें कोन करिबा ना गोटे थरो से मंथ रो फर्स्ट मंथ बा एनी मंथ डेट टा को हमें पुट करिबा एंड ड्रैगिंग करनबा नेक्स्ट डेट गुडा को ऑटोमेटिकली सेल गुडा रे पड़ी जिवो सेमती हमें कोनोसी मंथ सपोज हमर फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल जनवरी तो कले भी होबो बट फाइनेंशियल ईयर मते पर्टिकुलरली अप्रैल रु प्रेजेंट करिबा को पड़ुची अप्रैल 2024 रु प्रेजेंट करिबा को पड़ुची तो अप्रैल थारु ड्रैगिंग करि नबो नेक्स्ट मे जून ऑटोमेटिकली मंथ गुडा को पड़ी जिवो संडे द फर्स्ट डे ऑफ द वीक लिखिलो एंड ड्रैग करि नेलो सेटा पड़ी गेला दैट फीचर इज नोन एज योर ऑटो फिल नेक्स्ट अनदर फीचर इज योर ऑटो कंप्लीट देयर आर मेनी सिचुएशंस कम वेयर वी फिल अप द डाटा ऑटोमेटिकली लाइक गोटे सेल रे तमे एंट्री कलो मैनेजर देन आफ्टर द अकाउंट्स देन आफ्टर योर क्लर्क देन आफ्टर योर पियन नेक्स्ट व्हेन से जो डाटा बा से जो कॉलम रेंज रे जदी तमे एम लिखि दोउछो दैट ऑटोमेटिकली फिल अप्स द मैनेजर so that feature is known as your auto complete feature next feature is your fill series means that can serially put if there is Sunday and dragging the next onwards that will be put as Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
and Sunday full next जो पर्यंत dragging करनोथिबो that month that there you will be put. So these features are known as your automatic data entry features in Microsoft Excel: autofill, fill series, and autocomplete. And here the right answer is autofill. Next, what type of chart is useful for comparing parts of a whole? गोटे मास डाटा दिया जायछि तुमको अनेक गुडा डाटा दिया जायछि एंड ता भितर तुमको कंपैरिजन करिबा को कुआ जायछि ताले आ भितर को चार्टटा सुइटेबल हबो ऑप्शंस आर पाई चार्ट कॉलम चार्ट लाइन चार्ट एंड डॉट ग्राफ कोडा सुइटेबल हबो आ भितर what will be the right answer anyone the right answer is your pie chart. Pie chart means this is the rounding chart and that considered as 360 degree and according to the data it will be part and put the percentage 36 not 360 degree it will be considered as the 100% according to the 100% whatever the data given and that will be partitioned 100% नै जिवो टोटल होल टाको एंड सेही अनुसार जहा थिबो से कंपैरिजन कर देबो मास रे बा होल रे नेक्स्ट the basic unit of a worksheet into which your enter data in excel is called जोथिरे बा एक्सेल रो एई भली गोटे जिंस अछि जोठी की तमे बेसिकली डाटा एंट्री गुडा को करि थाओ सेटा को कोन कहंती एक्सेल रो that is the cell table box or column where will be the data basic data entry done cell the right answer the cell is the right answer because cell there are here I will clarify the thing there is a black spot put on a cell that is known as the active cell to sabu kichi can you tell me how many rows and columns are available in excel in a worksheet how many rows and columns are available anyone 10,48,576 rows are there and 16,384 columns are there प्रत्येक वर्कशीट रे 10,48,576 rows and 16,384 columns प्रत्येक वर्कशीट रे एटा थाए and rows are named as 1 2 3 4 5 6 according to last number is put the last row number and columns are named as A to Z then after double A to double Z like that last column is your XFD in this procedure there are 16,384 columns এই procedure রে যাই আমি 16,384 columns পাব A ठारू Z पर्यंत 26 टा A रु A Z पर्यंत 26 टा तो এই ভলি করলে A রু Z Z पर्यंत আমি 26 into 26 that is column numbers then after triple A to starting H and last XFD पर्यंत जाइछि এই procedure 16,384 column मिलि थाए मोर एठी क्वेश्चन केवल थिला जे cell is the intersection point of row and column and whatever the active cell that can be entered that can receive data from us so the cell is the right answer where the basic data entry works are done next question table means the worksheet already is a table that is the electronic table that in excel the whole sum is a table because in a table there are rows and columns so how many sheets are there by default when we create a new excel file जेतबे गोटे नुवा excel file हमें तैयारी करिबा by default केतना sheets इतरे थाए 3 टा 3 worksheets are default in there but in newer versions can you tell me how many sheets are added newer version में कितना sheet आछी कहि परिबो कि कहि परिबो कि only one sheet are there गोटिए sheet ही आछिबो next in excel
which one denoted a range from B1 through E5? Can you tell me the data range? Data range means particularly आमे गोटे जगारु गोटे रेंज पर्यंत डाटा एंट्री करिचे एंड सेतक आमे सिलेक्टेड करके नउचे ताले से जो डाटा रेंज टा आमे जतले सिलेक्शन करी नउचे सेटा को भली भाबे डिनोट हिते बा को भली भाबे हमको विजिबल हिते बा को भली भाबे आसी हमको शो करते ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी एनीवन Option B. ऑप्शन बी or D? B for ball. B. Option B is the right answer. B1 to E5 means B1 colon E5. The data range is mentioned or shown like that. Next question. I think एथरे टिके हाइलाइटिंग हे जेछि बोली आंसर टा फाइंड आउट करबा सुविधा होछि ठीक अछि म एडवांस जिंस त म निश्चित भाबे ने पचारिबी तुमको an excel file is generally called a or an गोटे एक्सेल शीट को आमे जेमति कहूचे कोन गोटे कहूचे तो एक्सेल रो फाइल को आमे जनरली कोन कहू ई स्प्रेडशीट और वर्कशीट और वर्कबुक और खाली शीट कोन कहू गोटे एक्सेल रो वर्कबुक the workbook is actually known as the file and the worksheets are known as the actually the page in excel. Next, what type of chart will you use to compare performance of sales of two products? दीटा प्रोडक्ट रो जदी आमे किछि परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करिबा को चाहिबा ताले को चार्ट टा अधिक सुटेबल होबो column chart, a line chart, a pie chart, or both and A and B. Particularly किछि गोटे प्रोडक्ट रो परफॉर्मेंस को देखिबा पाई Column chart. column chart. Next, maximum zoom percentage in excel is maximum आमे गोटे एक्सेल रो इंटरफेस रे केते परसेंट जूम करि पारि the 400 is the right answer. Right answer. Can you tell me the maximum zoom percentage in Microsoft Word? Microsoft Word में maximum zoom percentage कितने? Anyone? The right answer will be the 500%. Only Word रे केवल 500% हुए and Excel and PowerPoint have the zoom level is 400%. किछि मु ए ऊपर आहुरी टिके भलो भलो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करिवि बाय द वे मु तुमको किछि क्वेश्चन आस्क करबा को चाहूची एठी से क्वेश्चन गुडा को तुमको किछि आंसर दबा को पड़िबो ना ना ब्राउजर नंबर अछि ब्राउजर टा पाइबार अछि Here is the questions जहां हमें डिस्कशन करिचे सेडा सब तो बेसिक जिंस ऊपर हमें डिस्कशन कले वर्तमान एठी किछि एमसीक्यू क्वेश्चन अछि तम मानु को ही आंसर दबा को पड़ियो मु आंसर जानि नै तो तमे मान आंसर दबा एंड मु क्लिक करिवि फाइनली हमें देखिबा केते सिक्योरिंग करचे 30 मार्क्स रु तम माने समस्त जानिछ जे माइनस मार्किंग थाए तो एठी माइनस मार्किंग आसीबो नै तमे निजे निजे काउंटिंग करिवो जे माइनस मार्किंग केते हेई पारे ओनली एठी शो करिवो केतेटा तमे ठीक कलो केतेटा तमे भूल कलो फर्स्ट क्वेश्चन अछि तमरो द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम इज कॉल्ड एनीवन कोड मु क्लिक करिवि सेल सबमिट
That's right. Great job. Next question. A group of cells is called a dash. A cell cluster, cell range, multi-cell, chart. What the right answer hobo? Anyone? Anyone give the answer? What will be the right answer? Cell range. Cell range. That's right. Next question. Where is the fill handle located? Amaro jo fill handle means autofill handle. Kout seta thai. Autofill विषय just टिके पूर्व में हमें discussion करूथिले. से autofill handle ता actually को जगह रा हमको Excel screen रो visible हुए. First thing in backstage view, in the bottom right corner of the selected cell. At bottom right corner of the selected cell. Is again. Bottom right corner of the selected cell. Bottom right corner of the selected cell. Option 2. This is. Yes, sir. No, wrong. I think on the right side of the page. No, this is no. This one. Thick. Right. आमे गोटे सेल को जतबे सिलेक्शन करूचे से सेल रो तळे गोटे स्मॉल ब्लैक प्लस साइन आछी नाही कि तो दैट इज नोन एज द ऑटोफिल हैंडल सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर राइट नेक्स्ट हियर ए पिक्चर इज गिवन टू यू गोटे चित्र एठी तुमको दिया जाईची इन दिस इमेज व्हाई डज द वैल्यू इन सेल G1 लुक स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यूज इन द फार्मूला बार एठी जो डाटा गुडा दिया जाईची सेल G1 रे थिबा डाटाटा कौन पाई टिके डिफरेंट देखा जाउची फार्मूला बार रे ऑप्शन गुडा तुमको दिया जाईची एठी एनीवन क्लियर देखा होने कोडा राइट आंसर हबो मु कोडा क्लिक करिवि कोडा क्लिक करिवि मु currency number format सर टिके जूम आउट करें देखा बहुत समय भाबी कहिछ बोते मत लागु ठीक ही हबो करेंसी फॉर्मेट रे अछि मींस डॉलर फॉर्मेट रे अछि सो दिस विल बी लाइक दैट नेक्स्ट क्वेश्चन you can click the tabs at the bottom of a workbook to switch between option Worksheet. number format worksheet formulas again option D worksheet worksheet जी सर हमें जेतबेले गोटे एक्सेल रे स्क्रीन रे हमें देखुचे वर्कशीट रे तार बटन टैब गुडा का साधारणतः वर्कशीट ही विजिबल होय शीट 1 शीट 2 शीट 3 एटा ही विजिबल होय नेक्स्ट लेट्स से you are trying to find your average grade what's wrong with the formula shown in the image ए जो इमेज ता तमे देखुचो ये इमेज रे एक्चुअली कोनटा रॉन्ग अछि ऑप्शन आर गिवन हियर ए इमेज रे एक्चुअली कोनटा फार्मूला लिखला बेले अछि मु ऑलरेडी तुमको सब एक्सप्लेन भी करि सारी छी ठीक है एडवांस अछि क्वेश्चन टा ठीक है समय चिंता करो एंड सब बेले गोटे माइंड रे भी तमरो रहिबा दरकार जे वी कैन अटेंड 100 क्वेश्चंस एट विद इन 1 आवर गोटे घंटा भितरे हमकु 6टा क्वेश्चन आंसर दबार अछि तो इतने समय भी चिंता करिवा नाही मैक्सिमम 38 टू 40 सेकंड चिंता करिवा दैट इज द मैक्सिमम और एनफ टाइम एनीवन ये कोई परियो मते equal sign it should have an equal sign first at the beginning okay this right answer next you can view a formula by double clicking the cell that contains the formula true or false true true why it is true can you explain me कौन पाई एटा ट्रू होबो मते टिके एक्सप्लेन करिवो कि एटा मु मजरे मजरे एंत टिके जानिया को चाहिबी जे एक्चुअली कौन पाई सेटा ट्रू होबो एनीवन एक्सप्लेन मी इट मी मे भी मते ओडिया रे को किछि चलिबो इंग्लिश रे कहिबा निहाते दरकार नै बुझिचे कोन मते को
You can view a formula by double clicking the cell that contains the formula. तुमने देखिथिबो आमे जेतबेले गोटे फार्मूला लिखिथाउ से फार्मूला जो सेल रे कैलकुलेशन होई थाए तापर जेतबेले क्लिक करि दिया जाय से फार्मूला बार रे सेटा देखाय जे कोनटा कैलकुलेशन हेछि फार्मूला बार इन द राइट हैंड साइड ऑफ द नेम बॉक्स तुमे जो एक्सेल रे इंटरफेस देखुछो प्रथमे तमरो रहिछि टाइटल बार देन टाइटल बार परे तमरो रहिछि टैब्स रे क्लिकिंग करले आछि रिबन तळकु साइड को रहिछि तमरो लेफ्ट हैंड साइड रहिछि नेम बॉक्स एंड राइट हैंड साइड रे रहिछि तमरो फार्मूला बार से फार्मूला बार रे जो सेल रे कैलकुलेशन रही थाए सेठी क्लिक करले फार्मूलाटा शो करे से एक्चुअली क्वेश्चन रा थिला जे केमिति से फार्मूलाटा कोन लेखा जायछि जानिबा ठीक कथा से कहितला जेतबा डबल क्लिक कर दिया जाय से सेल रे से फार्मूलाटा जहां फार्मूला बार रे शो करूथे से सेल रे से वैल्यूटा नो शो करी फार्मूलाटा कोन लेखा जायतला सेटा शो करे दिस इज राइट और नॉट Right, sir. Okay, next, submit. Next question. Which of the following is an absolute cell reference? Excel दी प्रकार cell reference use करा जाए. Actually जो हमें कहूचे absolute cell reference आ भीतर कोटा. Sir, option D टा जो किछि मार्क अछि कि मझी रे D टा Option B या C आर कोटा कहूचो तमे. सर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी थोड़ा लागी गछ ना के तो जणा पड़ना के Option A. हाँ. Anyone? A2 टा हबो सर A. किसी सिंबल नहीं जो सर First one. सर ऑप्शन तो I think this will be wrong answer. Okay, submit by according to your instruction. I will Yes, submit it. Sorry, the answer is incorrect. This is the absolute reference. तमे देखिथिबो जेतेबेले कोनोसी गोटे तमे गोल स्टिक जदी यूज करिथिबो जोटा हमें कहूचे गोटे वैल्यू को चेंज करूचे इन ए स्पेसिफाइड सेल हमें गोटे वैल्यू को चेंज करूचे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला सेट अनुसार सेतेबेले जेतेबेले तमे सेल ऊपर क्लिक कर दउथिबो से जोठी फार्मूलाटा पटिया पे थिबो बा सेल रेफरेंसटा दबा पई थिबो सेटा एई भଳି ही शो करथिबो $A and $2 that is known as your absolute cell reference. Clear? सेटा कोड शो करिवो एटा शो करिवो ऑलरेडी जो फार्मूला तमे गोल स्टिक रो जोटी फार्मूला सेट फार्मूला दउथिबो जेतेबेले जो फार्मूलाटा कैलकुलेशन हेतिबो सेही सेल रे क्लिक कर दबो ऑलरेडी सेही सेट सेल बॉक्स रे भी एटा शो करे. So that is the cell reference and that cell reference is known as your absolute cell reference. Clear? सर माने एटा तो नेम बॉक्स रे किंतु सेम थिंग देखेबो ना No, name box is something different. That is the A2 is the name, cell name. But I want to know the absolute cell reference quota. Absolute cell reference hoche eta. Next. Which of the formula below are valid? एमानको भितर कोटा होचे फार्मूलाटा वैलिड. एटा टिके सर टॉप क्वेश्चन लागु छी टॉप क्वेश्चन मत सेति पई देई छी एई भली क्वेश्चन उडा का आसे बोले देई छी प्रथम रु तमु टिके अवेयर कर देली जे टॉपिक ता एई भली आसे जनरल क्वेश्चन एंड मु टिके एडवांस आडो को जाई छी एटा कोटा राइट आंसर होबो टिके क्विकली करिबा नले समय सरी जिवो आहुरी क्वेश्चन उडा का पेंडिंग हेकी रहि जिवो मार्क भी जानी परिबानी फास्ट और नेक्स्ट उडा को कोटा हबनी सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई टिके डीपली चिंता करो ऑलरेडी जदी तमे क्लिक कर देथिबो ना एठी तिन ऑप्शन अछि किंतु एग्जाम रे सेटा मिलिबो नाही. I think last is the right answer. ठीक Sorry. है आंसर First is the right answer. Okay. Next question. What value would Excel return for this formula? ए formula पई कोन रिजल्ट आसीबो? ठीक है क्विकली भी कहिबा नले होबा नाही. 26. Yes, 26. Right answer. Next. What feature did we use to quickly apply the formatting shown in the image? ये जो image हमें देखुचे ये image रे
এই যে ফরম্যাটিংটা আপ্লাই করিবা পাই এମାନଙ୍କ ভিতরে কোন ফিচরটা আপ্লাই করা যায় এনিওয়ান Data scenario format. first a second a third a four ऑप्शन डी this one नहीं ऑप्शन डी डी फॉर डॉग Data. this one जी जी no that is wrong answer conditional formatting is the right answer okay condition basis रे सेल गुडा कर वैल्यू गुडा को हमें डिजाइनिंग करू बा फॉर्मेटिंग करू नेक्स्ट what is the main advantage of selecting the mark as final option एमानको भितर कोटा ऑप्शन ता ठीक आंसर होबो it ensures that the worksheet is free of errors it discourages other users from editing the workbook it prevents other users from viewing the workbook it prevents other users from editing the workbook कोटा राइट आंसर होबो what is the main advantages of selecting marks as final option कोटा राइट आंसर होबो सर स्किप this one I think it will be wrong answer सर because main advantage टा कोन पचाइसी I think এটা wrong answer হবো মতে লাগুচি এডিটাও করিও বল লাস্ট মতে লাগুচি বি টা হি ঠিক आंसर হবো is it discourages other users from editing the workbook next the four areas in this image are used to create a ଆମେ excel ରେ କଲା बेले एई भली गोटे डायलॉग बॉक्स केबे केबे देखिया को मिले छै जो डायलॉग बॉक्स ता केबे देखिबा को मिले ई ऑप्शन भितर कोडा हमें यूज कला बेले कस्टम फिल्टर a pivot table a subtotal or complex formula केबे यूज कला बेले पाइवट टेबल ऑप्शन बी या डी बी बी फॉर बॉल बी सर this one ha pivot table right answer next question is your which feature starts with a desired result then calculates the input values that will give that result मु जस्ट टिके आगुर भी डिस्कशन करी देछि गोटे सेल रो वैल्यू को चेंज करले अन्य सेल रो वैल्यू चेंज हो जाए बा फार्मूला रो रिजल्ट अनुसार गोटे सेल रो वैल्यू एडजस्टमेंट हो जाए मु जस्ट टिके आगुर भी डिस्कशन करूथली सेटा कोडा राइट आंसर होबो एनीवन एक्सेल रो को फीचर्स रे आमे जेतले रिजल्ट गुडा का कैलकुलेशन करी थिबा गोटे वैल्यू को चेंज कला बेलो को तार जो रिलेटेड वैल्यू बा ता ऊपर डिपेंडेंट थिबा वैल्यूटा डिजायर्ड रिजल्ट को बदलिबा सहित सेटा भी बदली जिवो व्हाट विल बी द राइट आंसर एनीवन हमें एते समय चिंता करिबा नहीं एते समय चिंता करले आगो को माने क्वेश्चन गुडा का हम छाडीबा को पड़िबो एनीवन नहीं सर आसुन थर्ड data validation I think this will be wrong answer eta bhul hobo I think goal seek will be the right answer yes goal seek is the right answer mu just tikya guru bi seta कहउथली next what is a workbook in excel ro गोटे वर्कबुक कहले कोन बुझा जाय a file that stores one or more worksheets a sheet of paper with printed data on it a collection of files in a folder a file that store can one more worksheet option A right answer next question how can you select multiple cells at once in excel रे हमें multiple cell गुडा को सिलेक्शन करिबा तो आ भितर कोटा हमर राइट आंसर हबो एनीवन क्लिक अप डायरेक्ट इट का ठीक है कोटा राइट आंसर हबो
ऑप्शन ए बी सी डी कोटा एनीवन ऑप्शन ऑप्शन ए बी सी डी ये क्विकली जीवा फास्ट प्रेडिक्शन नबा 38 टू 40 सेकेंड्स भीतर आंसर को सॉल्व करिवा नल क्वेश्चन छाड़ीबा को पड़िबो सर कंट्रोल प्लस क्लिक ऑप्शन ए आई थिंक ऑप्शन ए बी द आंसर राइट बट हियर नॉट राइट ऑप्शन बी All- ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस ए हमें एक्सेल रे जेतेबेले मल्टीपल सेल बा एक रो अधिक सेल को सिलेक्शन करबा को चाहिबा हमको सब किछि यूज करबा को पड़िबो एटा भी कले भी हबो एमिति भी कले हबो शिफ्ट की को धरि की हमें सब सेल गुडा को क्लिक कला को मध्य सिलेक्शन होई जिवो हमें कंट्रोल की को धरि की मध्य सेल गुडा को भी सिलेक्शन all of these is the right answer clear next how do you resize a column or a row in excel हमें एक्सेल रे गोटे रो बा कॉलम को रिसाइज करिबा तो आ भीतर को ऑप्शन को हमें यूज करिबा डबल क्लिक द बॉर्डर ऑफ द कॉलम नहीं क्लिक एंड ड्रैग द बॉर्डर ऑफ द कॉलम एंड ऑफ रो ऑप्शन ए डबल क्लिक नहीं क्लिक एंड ड्रैग द Double बॉर्डर click भी हो। कॉलम और रो ऑप्शन ए या बी ए ये तो क्वेश्चन ए जी दिस वन जी सर दैट्स राइट हमें बॉर्डर को करके एटा को ड्रैग करले ही परिबो नेक्स्ट हाउ डू यू मर्ज टू और मोर सेल्स इन एक्सेल एक्सेल रे हमें गुडे सेल को मर्ज करिबा तो सेति पे हमु कोन करिबा को पड़िबो ओ ऑप्शन दा भीतर ठीक आंसर हबो none of these ways use the format cells dialog box right click on the cells you want to merge then select merge cells from the context ऑप्शन डी option डी लास्ट option a b c d कोटा डी option d i या b आ c डी मी तो लागू जी बोलते d या b डी फॉर डॉग okay I think also this will be right answer this will be right answer okay next what number formats can you use in excel या भीतर को नंबर फॉर्मेट तुम एक्सेल रे यूज करि परिबो ऑल ऑफ द फॉर्मेट्स सब क्लिक करियो ऑप्शन ए ऑप्शन ए जी सर फ्रैक्शन ए पर डेसिमल पर परसेंटेज पे ही पर कंफर्म जी सर श्योर ओके राइट दैट इज द राइट आंसर हमें सब किछि एक्सेल रे यूज करि परिबा फ्रैक्शन भी करि परिबा परसेंटेज भी करि परिबा डेसिमल भी करि परिबा बिकॉज़ एक्सेल इज ए स्पेशल मीन फॉर द स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस तो सब किछि कैलकुलेशन भी करा जाई परिबो ओके नेक्स्ट हाउ डू यू अप्लाई ए सेल स्टाइल टू ए रेंज ऑफ सेल्स इन एक्सेल हमें एक्सेल रो सेल स्टाइल को अप्लाई करिबा रेंज ऑफ सेल पाई का तो सेतले को ऑप्शन दा में यूज करिबा use the insert tab none of these use the format cells dialog box click in the cell styles button on the home tab कोटा भितरु ठीक आंसर होई परिबो इंसर्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इंसर्ट टैब एटा ऑप्शन ए this one I think this will be wrong answer सेल स्टाइल्स रे हुए एक्चुअली होम टैब रो से मेंशन कर देछि बहुत इंटरेस्टिंग जिंसटा प्रथम टैब एंड सेल स्टाइल्स ता से जो आमे जोठी मर्ज एंड सेंटर करछे तारी पाखा पाखी सेट थाए स्टाइल्स रे ऑलरेडी सेटा थाए ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ अलाइनमेंट इन एक्सेल एक्सेल रे हमें अलाइनमेंट करू बा डाटा गुडा को सेल रे अरेंजमेंट करू या भितरु कोटा गोटे एक्सेल रो अलाइनमेंट ऑप्शन नुह फॉरवर्ड is right answer Forward left out. is alignment center is alignment right is alignment so forward is no there is alignment available in Microsoft Excel
right. Next, what is the purpose of grouping worksheets in Excel? Excel रे डाटा गुडा का में grouping करिबा तो तार उद्देश्य एक्चुअली कौन? All of these functions to perform calculations across multiple worksheets at once, to move or copy data between multiple worksheets at once, to apply formatting changes to the multiple worksheets at once. Who the right answer of grouping करिबा पई कोन पई कि हमें यूज करू? Anyone? skip sir asking Skip करिबानी all of these. आंसर दवा. I think all of these functions. या भितर मु किछि किछि तुमको माने आंसर उडा कहि दैछि तो मार्क सिक्योरिंग निश्चित भाबे अधिक होई जीवो बट नेक्स्ट को टिके माइंड रे सेटिंग करिबा मु तम ऊपर ही छाडीबी एंड तमे ही मते आंसर डा पूरा पूरी कहिबो. अच्छा नेक्स्ट, what symbol is used in Excel formulas to represent multiplication? Multiplication करिबा पई एमान को भितर को सिंबल डा यूज करा जाय? option Star. A option A Option A means the asterisk symbol. Do you think it is right? जी sir Yes, Right. sir. Okay. Multiply ପାଇଁ କିଛି ତ symbol ନାହିଁ हो तो obviously ଆମେ asterisk symbol ही यूज करिथाउ. Next, what is the formula to calculate the sum of cells A1 through A5? A1 ରୁ A5 पर्यंत ଆମେ सम बाहर करिबा तो एमानक भितर को ऑप्शन टा ठीक हबो? Option D. Option B. I Option think A. this will be wrong answer. Option A will be the right answer. कारण एटा A. गोटे सम होची ऑलरेडी गोटे फंक्शन एंड ग्रुप में जस्ट टिके आगुर भी कहउतली ऑल फार्मूलाज इन एक्सेल बिगिंस विथ एन इक्वल टू साइन. ए जिंसटा जदी मन रहि थांदा ताल निश्चित भाबे ऑप्शन ए टा कहि दला. ओके, लीव दैट. नेक्स्ट, प्रोसीडिंग टू द क्वेश्चन, what is the example of a relative cell reference? Just टिके आगुर option D absolute cell reference का जाइतिला तो Option- relative cell reference कोटा? D. A1 option A sorry B sir B D. sir. confirm की को? 100% D. sir. sir. option B Option D. D. Again. Option D. I think this will be complete wrong हबो. option काहे ना D एटा एटा ऑलरेडी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस मु कहिची. हमें पूरी अगेन कहूचे से गोटा कहि हबो जदी हमर रिलेटिव सेल रेफरेंस. आई थिंक रॉन्ग. नॉर्मल एटा होची केवल सेटा कहंती हमर रिलेटिव सेल रेफरेंस. मु जोटा तुमको दीट प्रकार रेफरेंस थाए गोटेला एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस गोटेला रिलेटिव सेल रेफरेंस. रिलेटिव मींस एक्सेल रो जोटा होची एक्चुअली रिलेटेड माने जोटा सेल रो नाटा जोटा हमें कहूचे. जनरली A1 is A1. So this will be put as the reference of the cell where the formula or something is calculated. Okay. Next question. Which option allows you to lock certain rows or columns in place while scrolling to large worksheet? गोटे बड़ वर्कशीट रो स्क्रॉलिंग समय रे एक्चुअली से गोटे कॉलम को बा रो को लॉक कर देबो. या भीतर को फीचर्स है? Lock pen. Lock pen. I think this will be wrong. एटा भूल हबो काहे ना फ्रीज पेन्स ता मु जानि गोटे पाठ अछि एक्सेल रे एमिति किछि मु सुनि नै. ठीक अछि, फ्रीज पेन्स द राइट आंसर. हमर एटा फ्रीज पेन्स मारि देले सपोज नेम ऑफ द एम्प्लॉइज, देयर डेजिग्नेशंस, सैलरीज, रो विल बी कांस्टेंट. रो रहिबो सेंती एंड जदी 5000 एम्प्लॉय मानकर विषय रेकॉर्ड अछि हमें स्क्रॉल करि करि गले केवल डाटा गुडा के ही स्क्रॉलिंग हबो बट हेडिंग रो रो कोनोसी स्क्रॉलिंग हबो नाही. So freeze fence is the right answer. Next, what is filtering in Excel? Excel रो filtering ता कोन? data Last viewing data based on based on certain criteria Option A, B, C, D. Put Option the D. right answer. D. Option D. जी sir Viewing data based on certain criteria. Yes. Just हमें टिके सेटा को डिफरेंट वे रे डिस्कशन करिथिले
एंड किछि क्राइटेरिया बेस रे ही देखा जिवो ठीक राइट आंसर नेक्स्ट व्हिच चार्ट टाइप वुड बी बेस्ट फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज अक्रॉस कैटेगरीज ए स्टाइल रो किछि गोटे क्वेश्चन म तुमको बुझेइथिली पचारिथिली जनरल रे एंड सेही क्वेश्चन टाको टे डिफरेंट स्टाइल रे से आसीछि कॉलम कोटा ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी जी या बी डी सर डी राइट आंसर नेक्स्ट व्हाट इज ए पाइवट टेबल गोटे पाइवट टेबल आमे यूज करू एक्सेल रे बहुत गुडा जो फीचर्स कहली कंडीशनल फॉर्मेटिंग थाए डाटा वैलिडेशन थाए कंसोलिडेट थाए गोल स्टिक थाए तो ता भीतर गोटे जिंस थाए पाइवट टेबल ए पाइवट टेबल टाको माने कोन ए जिंसटा काहे सेटा माने कोन पई यूज करा जाय a type of formulas a way to create macros a tools used to summarize data a type of chart A type of chart. a type of chart I think this will be wrong answer a tool Summarize data. used to summarize data Summarize. just edit भी कहि दउची pivot table विषय रे pivot table is an interactive table that lets you analyze large size of data in a list you can rotate its rows and columns according to your requirement to find out different summaries totaling or compare related items pivot table होच ओटे इंटरैक्टिव टेबल जहा कि लार्ज साइज रो डाटा को एनालिसिस करिया पे व्यवहार करा जाय तमे तम आवश्यक अनुसार रो को कॉलम को कन्वर्ट करि परिबो कॉलम को रो को कन्वर्ट करि परिबो डिफरेंट समरी गुडा का पाइबा पे आ पाइवट टेबल रिपोर्ट होच सेति पई सुइटेबल जेतला मे किछि समरी बाहर करिवार थाए टोटलिंग करिवार थाए बा रिलेटेड आइटम को कंपैरिजन करिवार थाए क्लियर नेक्स्ट प्रोसीडिंग करिवा व्हाट इज द गोल ऑफ द व्हाट इफ एनालिसिस व्हाट इफ एनालिसिस रा एक्चुअली लक्ष्यटा कोन there are many things pivot table goal seek scenario conditional formatting सेही भली गोटे जिंस अछि व्हाट इफ एनालिसिस आ तार यूज टा कोन एक्चुअली कोन पई एटा को यूज करा जाय व्हाट इफ एनालिसिस रो काहे की यूज करा जाय जोठी हमर कंसोलिडेट अछि जोठी हमर सिनेरियो अछि सेही आखा पाखी ही अछि व्हाट इफ एनालिसिस तो ये व्हाट इफ एनालिसिस को हमें काहे यूज करू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ what will be the right answer yes to explore how changing input values affect to the calculated values what if analysis submit then we'll see the result what is the result secured by you all see results you answered 20 out of 30 questions correctly 30 टा क्वेश्चन रो 20 टा आंसर हमें ठीक से देइछे एंड सेटा एक्यूरेसी एतिकी नउछि okay this class is completed for today and in next classes we'll discuss another interesting topic about the computer okay thank you all